Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today, we are going to start our chapter 2, which is exploring Windows 10. So, let's learn in detail about Windows 10 in this chapter without wasting any further time. The name of our chapter is Exploring Windows 10, and the topics which we will discuss here are Windows 10 history, arrow features of Windows 10, searching in Windows 10, multitasking in Windows 10, and virtual desktops. Now we have an activity which says color the given picture with your favorite crayons. Now do this at your own. In our previous class, we have learned about the file management in Windows 10. Here in this chapter, we will learn about advanced features in Windows 10. Now Windows 10 history. MS Windows एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए। नाउ जो फर्स्ट वर्जन है विंडोज का वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1985 एज विंडोज 1.0। Since then, many more versions of Windows software have been released. Windows 10 एक most recent version है of Microsoft Windows operating system and ये successor है of Windows 8.1। Microsoft ने अनाउंस किया Windows 10 को in September 2014 and the next month made a technical preview of the OS available to a select group of users called Windows Insiders. Microsoft released Windows 10 to the general public in July 2015. Overall, users and IT experts considered Windows 10 to be much more expertise friendly than Windows 8 because उसके अंदर और ज़्यादा traditional interface है which enhances the desktop friendly layout of Windows 7, improved performance over past versions of Windows, and as well as effective search capabilities, and the integration of Cortana also helped the operating system gain support. Now the Windows 10 anniversary update है which came out in August 2016 made some visual alterations to the taskbar and start menu. It also introduced browser extensions in Edge and gave users access to Cortana on the lock screen. Now in April 2017 Microsoft ने रिलीज किया अपना Windows 10 Creators Update which made Windows Hello's facial recognition technology faster and allowed users to save tabs in Microsoft Edge to view later. Now in Windows 10 जो Fall Creator Update debuted था in October 2017 उसने ऐड किया Windows में Defender Exploit Guard ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उसको against zero day attacks, and the update also allowed users at IT to put applications running in the background into energy efficient mode to preserve battery life and improve performance. Now, what are arrow features of Windows 10? Windows 10 comes with three useful features which help us to manage and arrange open windows. Now, ये जो features हैं ये है arrow snap, arrow peek and arrow shake. All of them are available since Windows 7. Now, let's learn about them. First is arrow snap. Arrow snap feature allow करता है हमें to work on two programs side by side like this. कि हम दो programs पे एक साथ काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे, showing two windows side by side at the same time on the screen, and जो steps होते हैं उसको यूज करने के वो होते हैं hold the window from the title bar, हमें उसको ड्रैग करके लेके जाना है टू द लेफ्ट या फिर राइट साइड, एंड व्हेन द पॉइंटर हिट्स द लेफ्ट या फिर राइट एज हमें लीव कर देना है अपना माउस बटन। नाउ जो विंडो है वो स्नैप करेगी टू द लेफ्ट या फिर राइट एज एंड विल रीसाइज इटसेल्फ टू कवर द लेफ्ट हाफ और द राइट हाफ ऑफ द स्क्रीन। फिर आता है एरोपीक। एरोपीक फीचर अलाउ करता है यूजर्स को कि वो क्विकली व्यू कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप बाय मूविंग द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, एंड इट इज रियली यूजफुल अगर हमें नीड है टू व्यू आवर डेस्कटॉप विदाउट मिनिमाइजिंग ऑल ओपन एप्लीकेशन। तो शो डेस्कटॉप बटन जो लाई करता है राइट साइड में हमारे टास्क बार के वो पार्ट है एरोपीक फीचर का, and when many windows are open on the desktop, just click on the show desktop button, all the windows will get minimized and we will see the desktop. Clicking on the show desktop button again restore कर देता है all the windows back to the desktop. Task preview is another arrow peak feature in Windows 10. When many windows are open on the desktop, we can have quick view of what is there in a particular विंडो। सिंपली हम पॉइंट करके देख सकते हैं उसके आइकन पे ऑन द टास्क बार, एंड वी कैन ओपन द विंडो बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टास्क बार प्रीव्यू। मोर देन 75 मिलियन डिवाइसेस आर रनिंग विंडोज 10। नाउ एरो शेक फीचर अलाउ करता है हमें कि हम क्विकली मिनिमाइज कर सकते हैं एवरी ओपन विंडो एक्सेप्ट द वन वी आर शेकिंग।
नाउ टू यूज दिस हम क्लिक करेंगे विंडोज पे दैट वी वांट टू कीप ओपन ऑन द डेस्कटॉप, देन हम ग्रैब करेंगे उसको फ्रॉम द टाइटल बार और ड्रैग करेंगे या फिर शेक करेंगे बैक एंड फोर्थ क्विकली. Now all other windows except the one shoe will get minimized. Taking the window again restore कर देगा सारी की सारी minimized windows to the desktop. सर्चिंग इन विंडोज 10. नाउ समटाइम्स हम भूल जाते हैं लोकेशन कि हमने कहाँ पे अपने फाइल या फोल्डर को सेव किया था. सो इन सच सिचुएशंस हम यूज कर सकते हैं विंडोज 10 का सर्च फीचर टू फाइंड आवर लॉस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स. हमें क्या करना है, इसको यूज करने के लिए हमें एक प्रोग्राम ओपन करना है विदाउट गोइंग इनटू द एप्स मेन्यू. हम फाइंड कर सकते हैं फाइल्स इन विंडोज 10 यूजिंग वन ऑफ दीज मेथड्स. पहला है सर्च फ्रॉम द टास्क बार. आपको बस नेम डालना है अपने डॉक्यूमेंट का या फिर कीवर्ड फ्रॉम इट इनटू द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार एंड आप देखोगे एज अ रिजल्ट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अक्रॉस योर पीसी एंड वन ड्राइव अदर बेस्ट मैच. नेक्स्ट होता है सर्चिंग फाइल्स फ्रॉम द फाइल एक्सप्लोरर. हमें फाइल एक्सप्लोरर खोलना है फ्रॉम द टास्क बार या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं ऑन द स्टार्ट मेन्यू एंड चूज कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर को. देन हमें एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है फ्रॉम द लेफ्ट पेन टू सर्च और ब्राउज. फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया है दिस पीसी ऑप्शन को टू लुक इन ऑल डिवाइसेज एंड ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर. या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स टू लुक ओनली फॉर फाइल्स स्टोर्ड देयर. मल्टीटास्किंग क्या है विंडोज 10 में, सम ऑफ अस लाइक लिसन टू म्यूजिक. जब भी हम कोई दूसरा वर्क कर रहे होते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे, से अ वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर कोई एक्सेल शीट, तो इट इज सिंपल टू मल्टीटास्क इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना है मल्टीपल एप्लीकेशन पे, तो हर एक प्रोग्राम जो हम ओपन करते हैं वो अपीयर होता है एज अ बटन ऑन अ टास्क बार. टास्क बार बटन अलाउ करते हैं हमें कि हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन प्रोग्राम्स. वो ऑल्सो हमें अनेबल करते हैं टू हाइड यानी कि मिनिमाइज या फिर शो विच इज मैक्सिमाइज द प्रोग्राम. हम इजीली स्विच कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग बाय यूजिंग द कीबोर्ड. हमें बस ऑल्ट की या फिर विंडोज की को यूज करना है ऑन द कीबोर्ड टू यूज द लेफ्ट थंब. नाउ देन प्रेस द टैब की वंस व्हाइल होल्डिंग डाउन ऑल्ट या फिर विंडो की. When we press the window key, एक menu आएगा of all running programs and we can keep pressing the tab key and release the Windows key. Once the program we want to switch appears in front, or we can click the desired program window on which we want to work. नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्चुअल डेस्कटॉप्स. वन ऑफ द न्यू फीचर जो है विंडोज 10 का वो है एडिशन ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप्स एंड ये अलाउ करता है हमें टू हैव मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन्स वेयर वी कैन कीप विंडोज ओपन एंड ऑर्गेनाइज्ड. तो टू ऐड वर्चुअल डेस्कटॉप्स हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे टास्क व्यू बटन पे ऑन द टास्क बार. देन वी विल क्लिक ऑन न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन इन द लोअर राइट कॉर्नर. वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं न्यू डेस्कटॉप बाय क्लिकिंग ऑन टास्क व्यू अगेन. Then this is what we have learned about virtual desktops. Let's revise the chapter. MS Windows is an operating system software developed by Microsoft Corporation USA. Windows 10 is the most recent version of Microsoft Windows operating system. Arrow Snap feature allow करता है हमें to work on two programs side by side, showing two windows side by side on the same screen. Arrow Peek feature allow करता है हमें कि हम quickly view कर सकते हैं अपने desktop को by moving the mouse pointer to the bottom right corner of the taskbar. एरो शेक फीचर अलाउ करता है कि हम क्विकली मिनिमाइज कर सकते हैं सारी विंडोज को एक्सेप्ट द वन व्हिच इज शेकिंग. नाउ वी कैन साइमल्टेनियसली वर्क ऑन मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन विंडोज. लेट्स डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which arrow feature allows us to quickly resize a window to cover the left half of or the right half of the desktop screen? Arrows there. Which button lies to the extreme right on the taskbar? To desktop. Then which version of Windows came before Windows 10? Windows 8.1. Virtual desktops are used for multiple desktop screens, and which is not an arrow feature in Windows 10? Arrow page. That's true. Fill in the blanks. Dash feature allows users to quickly view the desktop by moving the mouse pointer to the bottom right corner of the screen. Arrow P. Windows 10 was released in July 2015. Windows 10 is the successor to Windows 8.1. Now, Dash allows us to have multiple desktop screens where we can keep our open windows organized as virtual desktop.
Each program that we open appears on the bottom of the taskbar. Let's do true false. Arrow shake feature allows us to quickly minimize every open window except that we are shaking. True. Arrow snap helps us to quickly resize a window. True. Latest version of MS Windows is Windows 7. False. We cannot create virtual desktops on the screen. False. We can open the window by clicking on its taskbar preview. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again at your own and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.